The next type is extensive reading. What is extensive reading? According to Brown, extensive reading is carried out to achieve a general understanding of a text. According to Long and Richards, extensive reading occurring when students read large amounts of high interest material, usually out of class, concentrating on meaning, reading for gist and skipping unknown words. Its mean extensive reading is taken place out of the classroom. It's just read for enjoyment. In extensive reading, if words are unknown to us, we don't try to know the meaning of these words. We skip them. Extensive reading, which involves learners reading text for enjoyment and to develop general reading skills. It refers the reading for joy, for example, reading of novels and type of story or magazines. This approach supports reading as much material in your target language as human possible. This way, its supporters claim you will be exposed to the widest range of vocabulary and grammatical structure. All of this is supposed to make you a better language learner and help you on the way to fluency. It's mean extensive reading में ना हमें large material को read out करना होता है. For example, novels पढ़ने होते हैं, magazines पढ़ने होते हैं. तो जो एक्सटेंसिव रीडर होते हैं ना, उनकी जो फ्लुएंसी होती है, जो उनकी रीडिंग स्पीड होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है, वोकैबुलरी इंक्रीज होती है इससे, एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भी बेटर हो जाती है. नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग. Day and Bamford put forward characteristics identified in successful extensive reading programs. A variety of materials on a range of topics is available. Students select what they want to read. The purpose of reading are usually related to player information and general understanding. It's totally based on student own interest. What he want to read. मतलब स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है उस पर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ वो सिलेक्ट करता है पढ़ने के लिए. बिकॉज ये एक तो प्लेयर इंजॉयमेंट और जॉय के लिए होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, इंफॉर्मेशन मिलती है इससे, जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है इसमें. रीडिंग इज इट्स ओन रिवॉर्ड. रीडिंग मटेरियल आर वेल विद इन द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टूडेंट इन टर्म ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रामर. मतलब लिंग्विस्टिकली इसमें ना लिंग्विस्टिकली स्ट्रांग होते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग, इसमें ना वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, ग्रामर स्ट्रांग होती है. रीडिंग इज इंडिविजुअल एंड साइलेंट. एक्सटेंसिव रीडिंग में ये होता है इंडिविजुअली इसको रीड आउट करना होता है, बिकॉज इट्स ऑल अपॉन ओन इंटरेस्ट. Important features of extensive reading. Text must be interesting. Since extensive reading is done for a longer period of time, you must take care to select texts that hold your attention and keep you coming back for more or after all. जो टेक्स्ट हम रीड आउट कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि हम उस पर अपनी अटेंशन पे कर सकें. सेकंड, वी नो दैट extensive reading is a very long reading, lengthy reading. It's need a long time to read. That's why it should be interesting. Text must be level appropriate because you must be able to understand a high percentage of a text before you even begin. The goal is to absorb unknown words through context. Therefore, if you don't understand the bulk of the context, the text is not yet appropriate for you to read extensively. For example, कोई context ऐसा आ गया है उस text में जो हम read out कर रहे हैं जिसमें हम interest नहीं ले रहे, जो हमें समझ नहीं आ रहा, हम उसको skip कर सकते हैं. Text must be of moderate length, especially a text should be on average at least 15 to 30 pages long. Text of this length are long enough to fully develop an idea or narrative and require you to keep mental track of ideas, concepts,
or characters as they develop over time. Learning material for extensive reading. What should we read to fulfill the purpose of extensive reading? ये नीचे दी हुई हैं बाइलिंगुअल बुक्स, मोनोलिंगुअल नेटिव बुक्स पढ़ें, मैगजीन्स को रीड आउट करें, कॉमिक बुक्स, स्टोरीज, नॉवेल्स, डाइजेस्ट, न्यूज़पेपर्स।